Hey students, hi everybody. A very good evening to everyone right in there. Welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I give you all a very warm welcome to this session wherein we are going to deal with the very topic which is determiners, and it's really one of the very important topics from your examination point of view. So kindly make sure that you all are listening to me very carefully and you all are understanding everything in just one go because it's gonna be an important session. I want all of you to stay tuned. I want all of you to understand the topic. And if there is something which doesn't make sense to any one of you, then kindly make sure that you all are definitely making a move with it. Okay, that's like really, really important. That you guys are asking me the questions, whatever you guys have the doubts, please make sure that you all are asking me those doubts because, like, if you come up with the doubts, no, that becomes so very much reflective of the fact that you guys are studying well, right? And you guys are understanding the topic, and that's why you're facing the problem in in answering the question. So you better just go ahead with that. Hey, good evening. Hi, Mahi. No, beta, Menti is going to be tomorrow right at 5 p.m. So be available right tomorrow. Hey, Shelly. Good evening. Hi, dear. Hello, everybody. Welcome to the very session. I hope everybody is doing good. I hope the evenings are going well for everyone right in there. Hi, Shelly. Hello, dear. Hi. Hello, everyone. Welcome to the session. I hope that everyone is doing really good. So my name is Preksha Sharma. I'm sure you guys know about me. And if somebody is new and watching the video for the first time, let me give a very brief intro about myself. My name is Preksha Sharma, and I have been teaching you all for quite some time, and I've been telling you all like how to be so good in your com skills, how to maintain a balance in your academic qualification, and to learn things for in your day-to-day life. So all these things are pretty important. You better pay attention to all these things. That will really be helpful for everyone right in there. Okay, so guys, please make sure that you guys are definitely making a move with the best for yourself. Okay, hi, Sefi. Hello, dear. No, Shilpi, dear. There is no menti today. The menti is going to take place tomorrow, right at 5 p.m. So be prepared with it tomorrow. Let's understand the topic in detail today. And from tomorrow onwards, I mean, not to onwards, but just tomorrow, we will be having the menti quiz. Okay. Hi and hello everybody. Hi Huma. Hello dear. Hello. Hi and hello to everyone right in there. Welcome to the very session everyone. I hope that you all are doing really good and super well as well. Okay, alrighty. So determiners everybody. What do you really mean by that? What do you really understand by that? What is your personal understanding of the given topic? So quickly tell me in the comment section everyone. Today we are just dealing with the concept. Alrighty, Huma sweetie, you are actually creating the spam in the class. Would you please mind? I mean, I hope you will not mind if you are just texting in one go, like at just once, and I'm just going to reply to that. Okay, because the continuous messages they are of no use. Thank you so much, Huma. And Asta, hey, hi dear, welcome to the very session. सो एवरीवन क्विकली टेल मी डिटर्मिनर्स क्या होते हैं हमने ये टॉपिक पहले भी किया है हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के चक्कर में भी we had studied this topic well. Now I want to know from all of you what are determiners, what do you understand by the term determiners. Tell me in the comment section. Hey Sinu, hi dear, hello people. So what is the meaning of this very particular term everybody? जल्दी बताओ व्हाट आर द डिटर्मिनर्स हमने कर रखे हैं ना मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता भी रखा है तो आज मैं फिर से ये सेशन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जिससे कि मैं आप लोगों को सबको डिटर्मिनर्स एक बारी में समझा सकूं सो मुझे ये बताओ व्हाट आर डिटर्मिनर्स आई वांट एन आंसर टेल मी समथिंग दैट you guys are aware of because it's one of the very important topics and we use determiners so frequently in all the kinds of sentences that we use while we are communicating with anybody. Okay, so you better tell me that determiner is the okay, what is it? Hey Amarjeet, hi Zuni, hello dear. Okay, it refers to state of mind of any circumstance. Nup Shilpi, no. What state of mind are we here talking about? It doesn't talk about the state of mind. Instead, what is it, everyone? Hi Seema, you're back here in this session too. So I love to see you again. So tell me, everyone, what are determiners? Quickly. Articles, yeah, of course. That's a type of determiner you're talking about. All right. If I'm asking you what is the definition of the term determiner, what is it that you're gonna say? क्या बताओगे आप मुझे? आपसे मैं पूछ रही हूँ कि मुझे determiner समझाओ. Suppose आपका कोई छोटा भाई बहन आपसे आके पूछता है कि भैया या दीदी what is determiner? तो आप कैसे समझाओगे? Articles determiners होते हैं. You have to define it, right? You should know a technical definition so that you can make somebody understand it. So what is that definition? Tell me.
Determiners comes before noun. Absolutely correct, Astha. I agree to that. These come before noun. Yep, come. Astha, beta, these come. These is plural. With plural, you use the plural form of the verb, okay? So these come before noun. Yes, it's a part of speech which is used before noun and pronoun to enhance. Very good. Very good, Seema. Absolutely correct. तो डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर, देखो डिटर्मिनर हर इंग्लिश टॉपिक का मतलब उसके टॉपिक के टाइटल से ही पता चल जाता है। डिटर्मिनर का मतलब होता है किसी चीज को डिटरमाइन करना, किसी चीज के बारे में पता करना, किसी चीज के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता करना। अगर मैं बोल रही हूँ like the blue book is on the table, okay, तो मैं यहाँ पे एक आपको बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि यही वाली जो ब्लू बुक है ना, जो पड़ी है सामने, ये ना उस टेबल पर है, द टेबल। तो जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं कह रही हूँ बुक इज ऑन द टेबल, अब मैंने घर में बैठे बैठे सोफे पे बैठे बैठे मैंने बोल दिया बुक इज ऑन द टेबल, कौन सी बुक की बात हो रही है? मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, व्हाट? am I talking about mystery? Am I talking about thrill? Am I talking about what? Like what is it? तो आप हमेशा स्पेसिफाई करते हो जिससे कि सामने वाले को समझ आए कि आप एग्जैक्टली exactly बात क्या कर रहे हो, उसको हम डिटर्मिनर बोलते हैं। बिल्कुल सही, ये नाउन से पहले आता है सीनू, आई टोटली अग्री टू दैट। ठीक है, तो डिटर्मिनर्स एक्चुअली होते क्या हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ, यू बेटर अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, डिटर्मिनर्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो हम एक नाउन के आगे लगाते हैं। नाउन क्या होता है? व्हाट इज अ नाउन? पीपल टेल मी द डेफिनेशन ऑफ नाउन। whether it is known or unknown, या शैली यू आर राइट अबाउट दैट। ठीक है, हमें वो चीज पता चलती है। तो आप मुझे ये बताओ कि नाउन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नाउन? क्या होता है नाउन? वी हैव बीन स्टडीइंग दिस वेरी पर्टिकुलर टर्म राइट सिंस लाइक सिंस अ चाइल्डहुड काइंड ऑफ थिंग। आपको बहुत पहले बताया जाता है। तो नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनीथिंग, राइट? नेम, इट्स अ नेमिंग वर्ड, राइट? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। तो किसी भी नाउन से पहले हम डिटर्मिनर लगाते हैं ये क्लियर करने के लिए कि नाउन क्या बोलना चाह रहा है, हम क्या मतलब नाउन किस चीज को रेफर कर रहा है। जैसे कि हम लगाते हैं अ बुक, द टेबल, माई कार, दिस स्टूडेंट, सम फ्रूट्स, मैनी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैंने अगर सिंपल में बोलूंगी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो आपको क्या पता चल रहा है कि बच्चे क्लास में है। लेकिन अब मैं बोलूंगी मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो इसका क्या है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली ना, नाउन किस चीज को रेफर कर रहा है वहां पे। अगर मैंने आपको बोला, देखो यहाँ पे अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि ये वाला टॉपिक बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। मैंने बोला मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो यहाँ पे एग्जैक्टली बात क्या है? मैनी मतलब बहुत, बहुत सारे बच्चे, राइट? दैट इज व्हाट इट मींस, एवरीबडी। तो अभी अगर मैं सिंपल बोलती हूँ स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, आपको समझ आ जाता बच्चे क्लास में है। लेकिन जब मैंने बोला मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, तो इस नाउन नाउन एग्जैक्टली किस चीज को रेफर कर रहा है? बहुत सारे लोगों को। तो बहुत सारे बच्चे क्लास में हैं। ओके, दया, सौरभ, शैली, हुमा, यू आर राइट अबाउट दैट। ठीक है, राइट। सो जैसे कि अभी एग्जाम्पल देखो, दिस शर्ट इज न्यू, तो ये शर्ट तो हुआ आपका नाउन। ठीक है, दिस मेरा एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिव, जो अभी मैं आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको समझाऊंगी, ये मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मतलब होता है? जो कोई चीज दर्शाता है, दिखाता है, ओके, उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। ऐसा होता है ना जब आप अपनी साइंस लैब में होते हो, लैब वहां पे होता है टू डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट, यू राइट द एम, राइट? तो वहां पे यू राइट लाइक दिस, नो, टू डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट। सो इन दैट केस डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू शो एन एक्सपेरिमेंट, दिखाना। ऑल राइट, तो यहाँ पे दिस शर्ट मुझे बता रहा है, अगर मैं बोल रही हूँ शर्ट इज न्यू, ठीक है, अब मेरे को नहीं पता 6 7 8 शर्ट्स पड़ी है, अंदर कौन सी शर्ट की आप बात कर रहे हो। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ दिस शर्ट इज न्यू, तो ये शर्ट नाउन किस चीज को रेफर कर रहा है? इसको, कि ये वाली जो है ना, ये व्हाइट कलर की जो शर्ट है ना, ये नहीं है। तो इट गिव्स यू एन एग्जैक्ट एंड अ स्पेसिफिक एंड अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स हमें डिटरमाइन आप कर पाते हो कि ये बात कर किसकी रहा है। एम आई क्लियर ऑन दिस? Yes, am I clear on this, everybody? Beta, Seema, adjectives are your qualifying words. They talk about the quality. Okay. But your this determiners, they are the words which determine the information about the specific information about that noun. All right, adjective, they are just talking about the quality, the blue girl, the intelligent girl, the bad boy, the poor child. Okay, कैसा बच्चा है? Poor. Okay, गरीब बच्चा है. All right, so they are just talking about the quality, adjectives. But determiners, they are not talking about the quality. They are talking in a lot of other context. Okay, ठीक है,
तो अब हम देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट इट एवरीवन। All right. Seenu, my dear, my name is Preksha Sharma. That's already given in the description below. Okay, I hope you got that. Alrighty people, देखो अब कितने टाइप्स के डिटर्मिनर्स होते हैं, हमारे जितने भी टाइप के डिटर्मिनर होते हैं, देखो बेटा, I always suggest this to all my kids. Please make sure that whenever somebody is teaching you or you are attending any seminar ever in the world or you're attending any like speech kind of thing or any webinar or anything, if you think that you are going to get some information which is going to be useful for you, so instead of directly procuring that PDF or any like study material directly from the teacher, try and make your own personal notes. And then just go through those notes because those are personally written by you and that will give an impression to your mind. Okay, it always helps. It has always helped me and I'm sure it is going to help you guys as well. Because there are certain points when somebody is teaching you that you keep on writing. Maybe you'll miss it later on when you're reading it on your own. I mean when you're reading from this PDF. So just try and make sure that you're noting down certain points so that it gives an impression to your mind right there itself. An imprint to your mind right when the teacher is teaching is very important instead of just revising it for some at some later point. Okay, that's like very important thing I'm sharing with all of you. I've told this thing right here because a lot many times the students they forget the types of determiners. So quickly when a question is there in your examination, no, that this should immediately be right in front of your eyes कि अच्छा इतने टाइप के determiners होते हैं. प्री डिटर्मिनर यहाँ लग नहीं रहा, आर्टिकल यहाँ लग नहीं रहा, डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं लगा रहे, पोजेसिव नहीं लगा रहे, ऑर्डिनल यहाँ शायद लग रहा है, कार्डिनल न्यूमरल नहीं है, क्वांटिफायर शायद है, डिस्ट्रीब्यूटिव इंटेरोगेटिव नहीं है. Now you have to make choice out of the two जो आपने select किए हैं कि quantifier और ordinals में से कुछ है. That is just one of the ways I'm telling you to not to be confused in your examination. Okay, hey Faisal, good evening dear. So predeterminer क्या होता है, देखो pre prefix होता है जिसका मतलब पहले, before, ठीक है. तो यानी कि आपका जो डिटर्मिनर होता है ना उससे पहले भी एक डिटर्मिनर लगाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री डिटर्मिनर. उसके मैं अभी आपको एग्जांपल्स देने वाली हूँ, मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है. प्री डिटर्मिनर का क्या फायदा होता है, वो एक तरीके की और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है आपके पास. जैसे अगर मैंने आपको बोला ना बोथ द गर्ल्स, ठीक है, आर मैरिड. ऑल राइट. सो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं ये बोलूँ कि द गर्ल्स आर मैरिड, हो सकता है चार लड़कियां खड़ी हों, ठीक है. अब मैं आपको प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करके बोल रही हूँ बोथ द गर्ल्स आर मैरिड. मैंने ऐसे इशारा किया थोड़ा सा, बोथ द गर्ल्स आर मैरिड. तो ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली है ना. जैसे अगर मैं बोल रही हूँ लाइक द गर्ल्स आर मैरिड, सो ये लाइक अच्छा ठीक है चारों, लेकिन मैं सिर्फ इशारा करके बोल रही हूँ बोथ द गर्ल्स आर मैरिड. तो बेसिकली जो मैं द गर्ल्स में, ये तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया जो लड़कियां दो यहाँ खड़ी हैं, ठीक है. तो द तो मैंने लगा दिया, द मेरा आर्टिकल में आता है और आर्टिकल मेरा मेन डिटर्मिनर है, ठीक है. लेकिन जो बोथ है ना यहाँ पे, बोथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अच्छा ये दोनों शादीशुदा हैं. तो ये जो बोथ है ना ये प्री डिटर्मिनर है. ये लिस्ट में भी आपको देने वाली हूँ. तो कभी कभी जब हम अपने एग्जाम में कुछ चीजें लिखते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, या यहाँ पे प्री डिटर्मिनर आना चाहिए या मेन डिटर्मिनर आना चाहिए, तो आप हमेशा नाउन पे आंखें लेके जाओ कि नाउन कहाँ लिखा है और नाउन से पहले क्या लिखा है. नाउन से पहले ब्लैंक है तो हमेशा आपका डिटर्मिनर आएगा. लेकिन अगर नाउन से पहले ऑलरेडी डिटर्मिनर दे रखा है इस लिस्ट के हिसाब से और उससे पहले ब्लैंक दे रखा है तो प्री डिटर्मिनर आएगा. दैट्स हाउ यू गो अहेड विद इट. ठीक है, समझ में आ रही है धनराज बेटा. आई एम जस्ट कीपिंग अ ब्लेंड ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस एंड ऑल्सो आई एम नॉट यूजिंग, मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश लैंग्वेज नहीं यूज कर रही हूँ. आई एम कीपिंग इट वेरी कॉन्टेक्चुअल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल. ओके, एंड आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा ट्राई करो कि समझ पाओ आप, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन डेवलपमेंट. ठीक है, द मोर यू आर गेटिंग इन टू द अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, इट विल बी लाइक वेरी वेरी easy for you to like cope up with your studies later on, like whenever you're going for the higher studies. So just try and understand. Okay, that really helps. Okay, चलो. प्री डिटर्मिनर मैंने आपको बताया कि क्या होता है. आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हमारे सबको पता है क्या होते हैं आर्टिकल्स. जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में. व्हाट आर द आर्टिकल्स एवरीवन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्विकली पीपल, डू दैट क्विकली. Yes guys, what are articles? ए एंड द, सिंपल. ठीक है, ए एंड द होते हैं जो मैं आपको अच्छे से क्लियरली करवाऊंगी.
फिर आपके आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है टू डेमोन्स्ट्रेट, शो करना, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पोजेसिव क्या होता है, सी लाइक पोजेसिव का क्या मतलब होता है, लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिलोंगिंगनेस, लाइक अगर मैं बोल रही हूँ लाइक दिस इज माई पेन, तो माई पेन का क्या मतलब, मेरा, यानी कि मेरे से बिलोंग करता है, सो आई पोजेस दिस पेन, ये मेरा पेन है, इट बिलोंग्स टू मी, दैट इज हाउ इट इज पोजेसिव। ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, when you are talking about the positions, that is first, second, third, fourth. All right, like whenever you deal with the positions, we go ahead with the ordinals. Then comes your cardinals or numerals. So cardinals, what are the cardinals? Are the numbers 1, 2, 3, 4, 5, like that. Okay, is that clear? Then what are the quantifiers? Quantifiers, they are basically the quantity thing that we are talking about. ठीक है, क्वांटिटी की बात होती है, जैसे कि मैंने बोला आपको सम, मैंने बोल दिया मैनी, मैंने बोल दिया फ्यू, मैंने बोल दिया लिटिल। ओके, फिर हमारे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, नीदर स्टूडेंट, ऑलराइट, ईदर स्टूडेंट. Okay, some much. Yes, absolutely correct. Yes, Shilpi, you're right about that. Very right. Okay, yeah, Chandan, you're right. Then comes your interrogatives, यानी कि जितने भी आपके WH words होते हैं, वो आपका basically यहाँ पे deal करता है with your determiner. Now, everyone, let's get started with our predeterminer thing. Like, what are the predeterminers? A predeterminer is a word that is used before a determiner. That is what I explained to everyone. मैंने ये बताया आपको कि प्री डिटर्मिनर एक ऐसा शब्द है जो डिटर्मिनर से पहले यूज किया जाता है, बट इज स्टिल पार्ट ऑफ द नाउन ग्रुप. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो नाउन होता है उसका ग्रुप में वो प्री डिटर्मिनर इंक्लूडेड होता है. नाउन ग्रुप क्या होता है? एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा ऑल द टाइम. टाइम आपका नाउन हुआ, ठीक है. द आपका मेन डिटर्मिनर हुआ. ऑल क्या हुआ? फिर ऑल आपका प्री डिटर्मिनर हुआ. तो अल्टीमेटली मैं कह रही हूँ सारे टाइम में, ऑल द टाइम, हमेशा. तो ये एक तरीके से क्या हुआ, ये नाउन के बारे में ही तो बात कर रहे हैं. जो भी दो डिटर्मिनर्स मैंने लगाए हैं, ऑल लगाया मैंने, द लगाया, ये दोनों टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो ये नाउन ग्रुप का पार्ट हुआ. डू यू गेट दैट? समझ में आई बात? एवरीवन, डिड यू गेट दैट? मैंने बोला ऑल द टाइम, टाइम मेरा हुआ क्या? टाइम मेरा हुआ नाउन. वहां पे मैंने लगा दिया द टाइम, ठीक है, मतलब हर वक्त हर समय, लाइक दैट. द हो गया मेरा मेन डिटर्मिनर, ऑल मेरा हो गया प्री डिटर्मिनर. अब ये सारा एक ही नाउन ग्रुप का पार्ट है, हेंस इट इज व्हाट, इट इज माय नाउन ग्रुप, एंड ऑल हेयर इज एक्टिंग एज माय प्री डिटर्मिनर. सिमिलरली बोथ आवर चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन नाउन हो गया, आवर आपका पोजेसिव हो गया, मेरे, पोजेसिव, हमारा बच्चा, ठीक है, हमारे बच्चे. और बोथ, दोनों, पहले तो हमारे बच्चे हैं लेकिन दोनों हमारे बच्चे, ठीक है. So that is again acting as what? That is again acting as your predeterminer. Now there are certain kinds of predeterminers. First, I would like to tell you all the example, and then I'm gonna tell you like how to relate from these examples. See, Meeta is charging half for the catering. केटरिंग नाउन है, द मेरा क्या है? मेन डिटर्मिनर. हाफ मेरा प्री डिटर्मिनर है, और विच इज एक्टिंग एज व्हाट, ये एक तरीके का मेरा फ्रैक्शन हुआ ना, राइट, फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसलिए मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है. हाफ के फ्रैक्शन के बाद आपका कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, दैट इज ओके, दैट्स नॉट प्रॉब्लमैटिक. ऑल राइट, अगर आपका, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर कुछ क्या कहते हैं प्रीपोजिशन आ जाता है, दैट्स फाइन. नाउ शी इज सच एन इंटेलिजेंट गर्ल. अब एक बात ध्यान दो कि आपके नाउन से पहले, प्री डिटर्मिनर्स में नाउन से पहले अगर आपका एडजेक्टिव आ जाता है, दैट इज ओके, ठीक है. उससे पहले फिर आपका क्या आएगा? एडजेक्टिव से पहले आपका आएगा, मतलब एडजेक्टिव आ जाएगा, दैट इज ओके. एडजेक्टिव से पहले फिर आपका मेन डिटर्मिनर आना चाहिए, और यहाँ पे जो सच है, दैट इज एक्टिंग एज अ प्री डिटर्मिनर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Am I clear on this to everybody right in there? Yes, guys. Yes. Now, did Kanak read all those books? So this is books, which is what? Which is your noun.
All right, and those is acting as my main determiner, all is acting my predeterminer. Okay, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम प्री डिटर्मिनर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. प्री डिटर्मिनर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 types. Okay, there are 4 types of predeterminers. Let's get going. Let's have a look at them. Okay, what are those categories? Alrighty. First is your multipliers. All right. What does that say? For example, if I'm saying that she is twice the sweetest girl, all right, or she is 5 times cunning girl than her, or 10 times. So जब भी आप ये times देखो, twice, thrice, okay, और times उसमें लग जाए किसी भी word में, we always take it what, like we take it as a multiplier. And it's a very important point to be kept in your mind. So you better keep that in your mind. It's like very, very important thing. देन वी टॉक अबाउट द फ्रैक्शंस. ठीक है, फ्रैक्शंस में क्या होता है? हाफ, 1/3 एंड 1/8. ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी अभी आपको बताया दैट शी इज चार्जिंग हाफ फॉर द केटरिंग देन रुबीना. तो वहां पे आप फ्रैक्शन मतलब उसे एक भाग में डिवाइड कर रहे हो, तो हाफ आया, फिर 1/3 आया, 1/8 आया. इंटेंसिफायर यानी कि आप ये बता रहे हो कि वो कितनी अच्छी लड़की है, जैसे कहते हैं ना, वाओ ये कितनी अच्छी लड़की है, सो शी इज सच अ स्वीट गर्ल. तो सच इज एक्टिंग एज एन इंटेंसिफायर. मुझे पता है कि वो एक अच्छी लड़की है, शी इज अ स्वीट गर्ल, लेकिन क्योंकि मैंने एक और वर्ड उसके आगे लगाया, शी इज such a sweet girl, तो it is intensifying the effect of sweetness I am talking about in her context. Okay, if I'm saying that she is a good girl, but if I'm saying she's a very good girl, you get an idea that she's not just good, like she's extremely good, right? When like that only, when I'm saying that she's such a sweet girl, that means that she's just not sweet. She is really and extremely sweet, like that. Okay, is that clear? He had come before I went. Satyam, no beta, this is wrong. He had come before I went. आपका ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस में आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस शुड कैरी, और मे बी द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, लाइक इफ वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कैरिंग योर पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर, द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस शुड कैरी योर सिंपल पास्ट वर्ब. दैट्स द रूल. ओके सत्यम. All right. So intensifier में आपके होते हैं rather, search, quite and what. Remember it for your good. Then we have others, all right, wherein we have all and both, and you saw that already in the examples. Also, all and both will come in your main determiner as well. But as I explained to all of you, you will always have to see it right before your noun whenever you're being asked to fill any blank, or you've been asked to like correct things, so you have to always check like what sort of word should be fitting here on the basis of the context of it. Cool. Okay, चले आगे चलते हैं. तो मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं? These type of predeterminer is used to express more than the specified amount. यही है, मतलब एक अमाउंट से ज्यादा अगर मुझे कुछ बात करनी है तो मैं क्या बोलूंगी, उस केस में मैं एक प्री मल्टीप्लायर लगाऊंगी. जैसे मैं बोलूंगी ना दैट शी इज 6 times कनिंग देन हर सिस्टर. ऑल राइट, सो उस केस में आप हमेशा जब आपको क्वांटिटी के टर्म्स में किसी चीज को ज्यादा बताना होगा, सो उस केस में आप मल्टीप्लाई का यूज करोगे. जैसे दिस आइसक्रीम इज ट्वाइस द साइज. ठीक है, ट्वाइस द साइज. साइज मेरा नाउन, द मेरा मेन डिटर्मिनर, ट्वाइस मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा मल्टीप्लायर हुआ. शी चेक्स हर ईमेल 3 times एवरी डे. तो यहाँ पे क्या है, ये डे जो है आपका क्या है, व्हाट इज डे? डे इज योर नाउन. Every is working as what? A distributive determiner. I'll explain it to you. And 3 times is working as what? Like it is working as your multiplier, which is your predeterminer. Okay? Clear on that, everyone? Any doubts so far? Do you want to ask anything, whatever we have done so far? Quickly, people in the comment section, please. ना बेटा सत्यम, आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हो. आप अगर आपका सेंटेंस ही प्रेजेंट परफेक्ट में आप ये बोलना चाह रहे हो ना कि मेरे जान से पहले वो आ गया था. ओके, दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. अगर आप एक पार्ट में अपने पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हो, पास्ट में आप वर्ब लगा रहे हो, आप दूसरे सेंटेंस में कैसे लगा सकते हो प्रेजेंट? आप कल की बात कर रहे हो और कल की बात करने में आप एक में पास्ट लगा रहे हो और दूसरे में प्रेजेंट, ऐसे कैसे? जब बात कल की हो रही है तो वर्ब तो पास्ट में ही आएगा ना, प्रेजेंट में थोड़ी ना वर्ब लगाओगे. आधा आधा थोड़ी ना हुआ था कि जब मैं चला गया था वो आया है. आप ये बोल रहे हो कि मेरे जाने से पहले, मैं बिफोर आई गॉन, कि मैं जब चला गया था, ऑल राइट, वो आया है.
तो है और था को आप कैसे मिक्स कर रहे हो? दैट्स नॉट पॉसिबल. ओके. He came before I had gone. No, so you are that the very first sentence that you had said, that is the right one. That he had come before I went. Dear, that is the right sentence. He had come before I went. वो आ गया था मेरे जाने से पहले. ओके. सत्यम समझ आ रही है बेटा बात? कंफ्यूजन कहाँ हो रही है ये बताओ. He had come before I went. That is the right sentence. चलिए. फ्रैक्शंस. अब हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की. दिस टाइप ऑफ प्री डिटर्मिनर इज यूज टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन ऑफ एन अमाउंट. यानी बहुत में से उसका कोई एक भाग, वन फोर्थ वन, थर्ड वन, सिक्स वन, सेवेंथ, लाइक दैट. तो शॉर्टेस्ट बस विल अराइव इन हाफ एन आवर. आवर आपका नाउन, एंड आपका डिटर्मिनर, हाफ आपका प्री डिटर्मिनर. I ate one third of Sanya's lunch. All right, that's what we see here. सत्यम बेटा वहां पे इसका इसका रिवर्स. या देखो वहां पे ना वो अलग तरीके से लिखा होगा. आई एम श्योर दैट यू आर मिस्टेकन समवेयर. अगर कभी आपको कहीं पे कुछ दिखता है, मेरे को एग्जैक्ट सेंटेंस ला के देना. ओके, बिकॉज आप जो एग्जैक्टली बोल रहे हो वो नहीं आएगा. बिफोर ही हैड गॉन. ओके, आई केम. ऑल राइटी. या यू कैन से दैट. बिफोर ही हैड गॉन आई केम. यस, दैट्स फाइन. ओके, दैट्स फाइन. ओके. यहाँ पे आप सान्याज लंच, ये आपका क्या हुआ है? यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं नाउन की. यहाँ पे आपका वन थर्ड आ गया. ऑलराइट, सान्या इज ऑफ कोर्स एक्टिंग एज अ नाउन फॉर अस है. इंटेंसिफायर, जो आपके किसी इफेक्ट को इंटेंसिफाई कर रहा है, बढ़ा रहा है. जैसे दिस टाइप ऑफ प्री डिटर्मिनर एक्सप्रेसेस सरप्राइज. ये क्या एक्सप्रेस करता है? सरप्राइज एक्सप्रेस करता है. डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करता है. प्लेजर या दूसरे इमोशंस. जैसे दिस टर्न्ड आउट टू बी सच अ ब्यूटिफुल डे. तो डे आपका हुआ नाउन, ब्यूटीफुल आपका हुआ एडजेक्टिव, अ आपका हुआ मेन डिटर्मिनर, और सच आपका हुआ प्री डिटर्मिनर. ओके. Is that clear to everyone? Hey Vikas, what happened to you? Are you had to study or creating other spam in the class? Clear? Now, what an interesting idea. So, idea is your noun. Interesting is your adjective. As I said, that we can incorporate an adjective in between the determiner and the noun. Okay. Then an is acting as your like determiner, and what is your interrogative, which is actually an intensifier. Now, a very important point that I would like to make right in here. Any WH word. Please understand, this is what I'm going to explain to all of you, even in your interrogatives. Any WH word, it can be an intensifier, that means it can be a predeterminer, and it can be a determiner as well. Now, looking at the sentence, after looking at the sentence, you will be able to say this so clearly कि ये intensifier है, that is कि predeterminer है या main determiner है. क्योंकि यहाँ पे मुझे and दिख रहा है what के बाद, तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पे ये WH word क्या है? प्री डिटर्मिनर है. आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पीपल राइट इन है. प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ध्यान से इस बात को समझ रहे हो. ओके. All right, it's like a very important thing that I'm telling you all, and please make sure that you all are understanding this well. Am I clear on this to everyone? समझ में आया? Yes, everyone. Clear? और आपका कोई भी WH वर्ड, ठीक है, वो आपका डिटर्मिनर तभी एक्ट करेगा अगर उसके इमीडिएट बाद आपने नाउन लिखा. तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन ही हुआ ना. WH फॉर्म के बाद अगर आप सीधा वर्ब लगाते हो तो वो क्या होता है? तो वो क्वेश्चन ही होता है ना, वो हमारा स्टेटमेंट थोड़ी ना. वो सॉरी, वो क्या कहते हैं, डिटर्मिनर कैसे होगा? लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ व्हाट पिज्जा, ओके, आर यू ईटिंग, सो हेयर it may work as a determiner, because immediately after WH word I am putting what? I am putting a noun, and that is important. Okay, is that clear everybody? Is that clear to everyone? Zoya, no problem. Okay, am I clear on this to everyone? Would you please give me a thumbs up in the comment section if you all have understood this? A very important point I'm making right in here, because these things really count when you're even writing your answers in your answer sheets. Okay, I'm just talking in the literature sense right now. Clear on that?
Very nice. Now the other predeterminers, what are those? Like there are a few predeterminers that do not fall into the above categories, like whatever categories I'd mentioned. So these are all in both. These two predeterminers are used to express an entire amount. Like she broke both her arms in the accident. Arms is your noun, her is your possessive determiner, and both is acting here as a predeterminer. Now, all his friends came to his graduation. Friends is a noun. Okay, his is what? His is basically your possessive pronoun. And all is what? All is acting as what, everybody? All is your, sorry. All is basically your predeterminer. Am I clear on this? Paro, sweetie, get out of the class. Your head just create the spam, and I don't entertain the spam. So, my dear, you are being kicked out. Okay, everybody. Got that well? Any question on it, anyone? Any question? ना चलिए चलते हैं. तो यहाँ पे जल्दी से मुझे बताओ प्री डिटर्मिनर कौन सा है? Kunjal, I'm doing well there. I have called you 3 times this morning. What is the predeterminer here? Seema says 3 times. What about others, everyone? Yes, guys, quickly, please. Okay, I'm just taking it to be like this 3 times, and it's a multiplier. Okay. Now we are coming to the next topic, which is really one of the very important ones, like in order to understand the difference between the pronouns and the determiners, because a lot of students say, Mahi, that is also right. So a lot of students, they get so confused with this. Let me make this so clear to all of you. Okay. What's a determiner? See, a determiner occurs at the beginning of a noun phrase. ठीक है, determiner कहाँ पे हम रखते हैं, ये मैंने आपको बताया कि जो भी noun phrase होता है, जैसे कि बोला मैंने, noun phrases like जो noun से related आपने कोई भी information लिखी है, like intelligent girl. So that is a noun phrase, because ultimately I'm talking about a girl, okay, who is intelligent. And before that, I am going to write the article, which is an. Okay, so that is what, that is what, that is a determiner. Okay, in some way, determiner qualifies the rest of the noun phrase. So of course, it is qualifying the rest of the noun phrase. Like I am saying an intelligent girl. So what does that mean? I'm talking about one intelligent girl. But if I'm saying like 4 intelligent girls, so 4 again is giving me information that how many girls am I talking about? I am talking about the 4 girls, which is again a quantifier. So it is basically qualifying the rest of the noun phrase. That is what I told you all. Now, a determiner can never exist alone. This is one of the very important points. You cannot just say you cannot say one, you cannot say four, you cannot say each. You have to use like some kind of a noun with it in order to give meaning to that determiner. So, a determiner or on all alone doesn't make any sense. Okay, it has got no value when it is just standing alone. Alrighty. Example, just have a look at it. Those, which is a demonstrative one. Classic songs. These are what? These are basically your nouns. So I am just talking about this fact that those classic songs were great. If I'm just saying that classic songs were great, तो कौन से वाले classic songs की आप बात कर रहे हो? So if I'm saying those classic songs were great, so I'm just specifying and talking about something which is a bit more specific. Okay, right? But if I'm saying now the next thing, I'm saying my car is the big one, or I'm just saying car is the big one. So किसकी कौन सी कार बड़ी है? मुझे नहीं पता. So यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ my is the big one, so that is again not making any sense, right? What are you talking exactly about? So that cannot exist alone. That is why you are adding like an information before it. Now moving ahead. A pronoun can take the place of a whole noun phrase. एक pronoun जो होता है ना, वो पूरे noun phrase की जगह ले सकता है. Example देखो, those were great classic songs. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं classic song को हटा दूंगी, मैं बोलूंगी those were great.
अब वो क्या है यहाँ पे बेसिकली ये प्रोनाउन की तरह एक्ट हो रहा है। क्यों? जैसे मैंने ऑलरेडी बात हम लोग खड़े हैं ग्रुप में एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कार्स और मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेसेस, मे बी somebody else is talking about the teddy bears or any other topic. So we have already started the topic and now we know that what is the subject matter that we are discussing about. So later on, instead of just repeating that particular thing again, for example, instead of again and again saying Prerna, you're very nice. Prerna, you're an intelligent girl. Prerna, where were you yesterday? Prerna, what are you doing? Prerna, have you completed your homework? So, of course, I'm not going to repeat Prerna again and again. Instead, I'm going to use the pronoun she in place of Prerna. So, the idea here is that the entire noun phrase can be replaced with your pronoun easily. All you need to understand is the context. Okay, when you're being asked to edit something, when you're being asked to omit something, you have to always look at the context because the context is the only thing that really matters. Okay, yeah. So now, for example, if I'm saying that everybody is talking about the car, like you are saying that my car is this, my car is that, or his car is this, his car is that. So if I'm saying that mine is the big one, what does that mean? Like I'm just making a comparison right in here. So what am I doing? I'm just replacing the noun phrase my car just with the pronoun which is mine. That's it. Okay. So most determiners and the pronouns they are exactly the same word. तो ज्यादातर जो आपके determiners और pronouns होते हैं वो ज्यादा same words ही होते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ ईदर को हम एज अ डिटर्मिनर कैसे यूज करते हैं. देखो वेन एवर यू हैव टू टॉक अबाउट द डिटर्मिनर माई स्वीटी व्हाट यू नीड टू डू इज वो डिटर्मिनर हमेशा ही हमेशा आपके नाउन से पहले आना चाहिए. दैट्स द फर्स्ट बेसिक रूल of your determiner. If it's gonna be a pronoun, it is going to replace the entire noun phrase. So you have to make sure that you know how you're using one single word because all the determiners can work as your pronouns. Okay. Hey Ashika, hi dear. Hey Suman, good evening. Sorry, Prerna, I missed your evening wish. A very good evening, dear. All right. Now, we can use either as a determiner before a noun to talk about the two choices or possibilities. How is that happening? See, the noun that follows either must be a singular countable noun. For example, either hotel will be okay as they both are near the venue. तो यहाँ पे जो होटल है ना वो तो मेरा नाउन हुआ. मैं इमीडिएटली उसके आगे ईदर लगा रही हूँ. क्यों? क्योंकि मैं ऑलमोस्ट दो पॉसिबिलिटीज की बात कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ या तो ये वाला होटल या तो ये वाला होटल. जब भी आप ईदर को यूज करोगे आप हमेशा दो पॉसिबिलिटीज को ही कंसिडर करोगे. तो इट डजंट मैटर विच ऑफ द टू होटल्स यू गो टू, यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि या तो ये होटल या तो ये होटल. दैट्स व्हाट आई एम लिटरली ट्राइंग टू टेल यू ऑल है. एम आई क्लियर ऑन दिस एवरीवन? Yes, everyone. Is that clear? Would you please make a sentence and write that in the comment section using it? Quickly, everyone. Try to make a sentence in the... Okay, that's clear to everybody. So try to make a sentence and give me a sentence in the comment section quickly, please. Are you all doing that? I'm just assuming that you guys are doing it. Krishna Yadav, I'm not getting your statement or the question that you are talking about. What exactly are you here mentioning? Okay, everyone. See, either आपको pronoun की तरह कैसे use करना है? We can use either as a pronoun. For example, मोना बोलती है, which sweater do you like, the green one or the blue one? तो यहाँ पे मैं अब ये the green one और blue one को ना पूरा replace कर दूंगी. मैं क्या बोलूंगी? I don't like either. तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने उसको pronoun की तरह use किया. So I can replace the entire noun phrase and I'm gonna use either. I don't like the green one and I don't like the blue one. But always make sure whenever it's about either, we are always talking about just the two things. Just the two things. Like if I'm saying either of the candidates, like either of the candidates is waiting for me. तो वहां पे मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ. ठीक है. A few determiners and pronouns are close but not exactly the same. जैसे my determiner है लेकिन mine pronoun है. मैंने ये आपको समझाया था मैं पीछे एग्जाम्पल. जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे. Which flavor do you want? Strawberry or chocolate? Either. It doesn't matter. So मैंने पूरा noun phrase replace कर दिया either से.
ईदर के बाद अगर मैंने नाउन नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज नॉट डिटर्मिनर, इट इज एक्चुअली अ प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यप सीमा, राइट। जल्दी से इसका आंसर दो, फिल इन द ब्लैंक। इट वाज अ ग्रेट फिल्म डैश एंजॉयड। Yes, everyone, what's gonna be the answer? Quickly, everyone. Very good. Okay, not everybody, it is all of us. Okay, आपको ध्यान से देना है आंसर। Okay, आर्टिकल्स एवरीवन, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट होते हैं हमारे एन और डेफिनेट होता है द। एन हम कहाँ पे यूज करते हैं? हम एन यूज करते हैं जब हम सिंगुलर चीजों की बात कर रहे होते हैं। ऑल राइट, इज दैट क्लियर एवरीवन? सुदीपा, आई होप यू आर गोना लाइक इट। Yes, guys. All right, here we go. All righty, ठीक है। Articles देखो, indefinite an, so it is used with the like when we refer to people or things in journal, यानी कि आप किसी specific चीज को नहीं mention कर रहे हो, आप in journal बात कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप a और n लगाओगे, ठीक है। So a is used before words with a consonant sound and an is used before words with a vowel sound. ऑल राइट, सो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप जब भी ए हम कहाँ यूज करते हैं? जो वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड से, जैसे मैंने बोला यूरोपियन, यहाँ पे य साउंड है। आप इस कॉन्सेप्ट से नहीं जाओगे कि क्योंकि ए ई आई ओ यू है, ठीक है, ए ई आई ओ यू दे रखा है तो वॉवल्स हैं, तो आप सीधा सीधा एन लगा दो। नहीं, इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। Instead, we are going to keep it A only. All right. Why? Because we have to always look for the sound, and the sound really does matter. So you better pay attention to these things. Alrighty. Is that clear to everyone? Am I clear on this? Yes, guys. ठीक है? Now let's have a look at the article an कि हम इसको use कैसे करते हैं. That's really important. जैसे कि some words start with a vowel, कुछ words ऐसे होते हैं जो vowel से start होते हैं, यानी कि a e i o u की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उनका जो pronunciation होता है वो consonant sound के जैसे होता है, जैसे कि European, य sound है यहाँ पे, य is actually a consonant, तो हमने अ लगाया। and is used before the words that begin with the vowel sound, जैसे they are used before singular countable nouns as well, ठीक है। जैसे गीतिका is an honest girl, so यहाँ पे o sound है, h silent है, so आप यहाँ पे an लगा रहे हो। they live in an apartment, अ है यहाँ पे, so यहाँ पे an आएगा। okay, now they are used before the name of occupations, occupations के नाम के आगे, जैसे कि डॉक्टर है, so a doctor आपने कर दिया, was treating him when he opened his eyes, या फिर आपने बोला a is used with few and little, okay, that's what you have to keep in your mind as well।
जैसे कि फ्यू जो है ना वो आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, अ लिटिल आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है. Like a few months ago, I was employed. This vegetable requires a bit of salt. That's it. Okay. Now they are also used before an adjective in a noun phrase. जैसे कि a sincere girl. All right. And is used before the abbreviations with a vowel sound. जैसे कि NMRI. So MRI, A sound is coming up. Okay. A sound is coming, which is actually a vowel sound. A is used before certain nouns that are considered as a single unit. Okay. So that is what is there. Knife and fork. इसको हम A consider करते हैं. Butter and bread. Bread and jam. इन सबको हम एक single unit consider करते हैं. So इसके साथ हम क्या कौन सा article लगाएंगे? We will be using a. All right, that is very important, so please keep that in your mind. All right, am I clear on this? All right. Okay people, is that clear to everyone? ऑल राइट, चलिए अब हमारा द हम कहाँ पे लगाते हैं आर्टिकल? इट्स लाइक एन इम्पॉर्टेंट थिंग. कोई भी कॉमन नाउन से पहले, जैसे कि द स्कूल, या फिर आप किसी पर्टिकुलर इंसान या चीज को रेफर कर रहे होते हो, जैसे दैट इज देयर इज लेस वाटर इन द टैंक. अब मैं अगर अपने घर में बैठी हूँ एंड आई एम सेइंग दैट देयर इज लेस वाटर इन द टैंक, सो ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टैंक ऑफ Suman's house or my neighbor's house. I'll be talking about the tank which is right in my house, right? तो द वहां पे मैं पर्टिकुलर चीज को रेफर करूंगी द टाइम, या फिर टू इंडिकेट दी ऑब्जेक्ट्स दैट आर ओनली वन इन द वर्ल्ड. ठीक है, जो सिर्फ एक यूनिक चीज है, यूनिवर्सली अवेलेबल. द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. या फिर एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को, जैसे कि स्कूल को या यूनिवर्सिटी को या प्रिजन को रेफर कर रही हूँ, जैसे शी इज इन द यूनिवर्सिटी. ठीक है, इन दैट केस. या फिर अगर आप कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो, जैसे शी प्लेड द गिटार, सो आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, आप उनके साथ द आराम से यूज कर सकते हो. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. शी प्लेड द गिटार वेरी वेल. ऑल राइट. या फिर अगर आपको कोई क्या कहते हैं बॉडी पार्ट को रेफर करना होता है, शी कोलैप्स ड्यू टू द हार्ट फेलियर. ओके. नाउ अगर कोई टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि द सन सेट्स इन द इवनिंग, or before something that has already been mentioned, but the women was admin. So again, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, go ahead with your question, Suman. जैसे मैंने आपको बोला, we are standing in a group and we are talking about the cars, the recently launched cars, and then I'm saying but the red one was really beautiful. So of course I'm talking about, like which car I'm here talking about and which brand I'm talking about. For example, I was talking about the cars from Maruti Suzuki, and I am talking about the car Brezza, and I'm saying that like we discussed a lot of cars with the different colors. So I'm saying but the red one was really good. So you know very well that the red one refers to what? It refers to the car that we saw in the Maruti Suzuki's showroom. Okay, so if you have mentioned to something that has already been mentioned before, in these such examples I've given you a lot many times while we have read the while we have done the word to word explanations of your literature books. Okay, so before a noun followed by a relative or prepositional phrase, जैसे कि ये हो गया on the table. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, द टेबल तो आपका नाउन हुआ, द लगा दिया ऑन, तो ये क्योंकि आपके प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसे प्रेपोजिशनल फ्रेज ले रहे हैं. लेकिन यहाँ पे उससे पहले एक नाउन आया है. ऑल राइट, नाउन आया है और उस नाउन से पहले आप द लगाओगे. सो बेसिकली किसी भी प्रेपोजिशनल फ्रेज से पहले अगर आपको कोई नाउन आता है, तो उस नाउन से पहले हम द डेफिनेटली लगाते ही हैं. एम आई क्लियर ऑन दिस टू एवरीवन राइट इन देयर? एडमिन मतलब जिद्दी, जिद्दी. ओके, क्लियर. नाउ अगर आप किसी फेमिलियर थिंग को मेंशन कर रहे हो, जैसे कि जो चीज आपको ऑलरेडी पता है, जैसे मैं बोल रही हूँ द सीलिंग वाज वेट. ठीक है, सो ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ अपने घर की सीलिंग की, मैं साथ वाले के घर की सीलिंग की तो बात नहीं करूंगी. ऑल राइट, इज दैट क्लियर?
Before dates and periods of time, she was a superstar in the 1970s. तो यहाँ पे the आपने लगा दिया 1970s year. Before a noun plus of, जैसे कि यहाँ पे है the drought caused the destruction. अगर यहाँ of से पहले मतलब जो of के बाद जो भी whole लिखा जा रहा है that is okay. लेकिन उससे पहले जो noun आया है उससे पहले आप the definitely लगाओगे. All right. Now before the names of the seas, rivers, mountains, etc. जैसे कि यहाँ पे Ganges है, ठीक है, ये this is the name of a river. All right. So this is one of the sacred rivers for Indians. तो यहाँ पे आप the लगाओगे. All right. Keep that in your mind. Is that clear to everybody? Is that clear to everyone? Yes, guys. Just tell me. Yes, guys. Is that clear? ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं. आप जल्दी से सही ऑप्शन बताओ इसमें से क्या है. क्विकली टेल मी द राइट ऑप्शन एवरीवन. Hi Nandini, I'm very well dear. Thank you so much. I hope that you're good too. What is the right answer? Quickly people. Hi Mehak, a very good evening. So here the correct answer is the, right? चलिए आगे. ऑल राइट. नाउ डिमॉन्स्ट्रेटिव्स. डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? जो कुछ शो करते हैं, जैसे कि ये वाले वर्ड्स आपको ये लर्न करने हैं. दिस, दीज, दैट एंड दोज. so they are used to indicate the things of the people that were being discussed, यानी कि जो ऑलरेडी डिस्कशन में है. दिस एंड दीज ये बेसिकली यूज किए जाते हैं टू पॉइंट एट द थिंग्स दैट आर नियर एंड विजिबल. वो वाली चीजों के लिए जो पास में है और जो दिख रही हैं. ठीक है. दैट और दोज बेसिकली उन चीजों को रेफर करा जाता है जो डिस्टेंस पे हैं और दिख रही हैं. जैसे कि मैंने बोला दिस शो इज बोरिंग, मेरे पास मैं देख रही हूँ बोरिंग है. दैट आइडिया, वो वाला जो आइडिया दिया था ना वो फैंटास्टिक था. और दैट गर्ल इज वेरी कनिंग, यानी दूर खड़ी है. दीज जो है दैट मीन्स दीज कुकीज आर ऑफुल, बड़े बेकारी, बहुत ही बकवास है. एंड दो स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स, वो जो वहां पे बच्चे खड़े हैं वो स्कॉलर्स हैं. प्लीज नोट दिस और दैट आपका क्या कहते हैं सिंगुलर होता है. एंड आपका दीज और दोज जो है. ऑल राइट. जस्ट मिनट पीपल. और आपका जो दीज है और दोज है दैट इज प्लूरल. सो बी माइंडफुल वेन एवर यू आर यूजिंग देम. Okay, hey, hi, Mukesh, hello. All right. Now, possessives, everyone. Possessives, they basically talk about, like, as I said to all of you, they talk about your belongingness, like something that belongs to you. Like, that is very important thing. Okay. Now, see, it says my, our, your, his, her, it's there. They are the words which show what? They show the possession. For example, if I'm saying this is my scooter, the table you are sitting on is mine. Okay, so this is the wrong example. I wonder what happened to her car. Where is her house? It is his notebook. Our house. So you see, like these are the words that you need to remember, which are basically what? Which are basically the determiners and the determiners that are good and important for your own understanding of the things. Okay? Clear? Ordinals. Ordinals deals with your positions. Okay. Like here, for example, like they show the position of a noun in a series. Like first, second, last, next, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, like that. For example, she was the first one to complete the test. Do you remember who was the third runner up? Like she is the last person. तो ये इसमें आप लोगों को ना कभी भी कंफ्यूज नहीं होना होता बेटा. प्लीज मेक श्योर कि आपको ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स में डिफरेंस बताओ. बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग उसे सेम कर देते हो. तो जो ऑर्डिनल्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपकी पोजीशंस के साथ बात कर रहे होते हैं कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन. इसको मल्टीप्लायर्स के साथ भी कंफ्यूज नहीं करना है. मल्टीप्लायर्स में आप हमेशा देखोगे ट्वाइस, थ्राइस और टाइम्स, वो मल्टीप्लाई होता है. यहाँ पे फर्स्ट सेकंड एस टी वाली चीज यहाँ पे आ रही होती है, टी से आपकी एंडिंग हो रही होती है. ठीक है.
Please keep this in your mind. Now coming to the cardinals, or we call it numerals. All right, why? Because we are here dealing with what? We are here dealing with the numbers. Okay, जैसे I have one pen, you have 5 notebooks, you have 6 phones. All right, is that clear? So now they are ordinary numbers like 1, 200,000 and etc. For example, I am saying 2 birds. All right, 1,000 bucks. 5 of them. All right, so यहाँ पे what am I doing? Directly, like immediately before the noun, I am keeping the number here. Is that clear to everyone? Yes, guys, got it? Great, Mehek. If you got that, I appreciate it. Alrighty, people, that's lovely. Now, quantifiers. What are the quantifiers? Quantifiers is like we are here dealing with the quantity. Okay, क्वांटिटी की जहाँ पे बात हो रही होती है तो हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को हमेशा याद रखने होते हैं, जैसे मच। मच आप हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हो। सम भी आप अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हो। सेवरल आप काउंटेबल के साथ यूज करते हो। अ लॉट ऑफ भी काउंटेबल के साथ, बोथ काउंटेबल के साथ, ऑल भी। अब देखो बोथ और ऑल आप लोगों के प्री डिटर्मिनर्स भी थे। अब वो दोनों आपके मेन डिटर्मिनर में भी आते हैं, ठीक है, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। तो आपको अपना दिमाग लगाना होता है जब आपसे पूछा जाता है लाइक वेदर इट इज a predeterminer or a determiner. So if it's directly returned immediately before the noun, of course it's a determiner. But if it is returned before your main determiner, then that is acting as a predeterminer. Okay. Now there was a lot of people, okay, in the stadium. Anshika had some fruits. Okay, they have enough food. All right, like Lily has much knowledge. So that is how you go ahead with the usage of these things. All right. Now distributives. Distributives basically talk about your distribution of the things. Okay, यानी कि फैलावट चीजों की। अब यहाँ पे आपके कैसे वर्ड्स होते हैं? Each, every, all right, each, every, either, neither, वो एक इंडिविजुअल को, each इंडिविजुअल को मतलब दे रेफर टू each इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप। तो हर ग्रुप के एक इंडिविजुअल को वो रेफर करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया each parent, every bike, all right, either side. So you have to be very careful about that immediately after it should come the noun. So neither child. Okay, is that clear to everyone? Right. Now the last part is your interrogatives, which are basically dealing with your WH words, and they are going to act as what? They are going to act as the determiner only and only immediately after them should come the noun and not the verb. If verb is coming after the WH word, that's an indication that that is a question. I mean, that is just a question that is not acting really as a determiner. Okay. Now here, see, what toppings, okay, do you want on your pizza? Which school are you attending this year? Whose baby are you watching all day? So this is the criteria if you're being asked to fill a particular blank, or you need to just give an answer to any question, and you have to just recognize like where which determiner has been used there. So you should be having that eagle eye. All right, like when you're looking at the question, you should be able to make this out that yes, it's an interrogative, it's a distributive, it's a possessive one, or like it is basically ordinal or cardinal. So just keep that in your mind. That's an important thing that I would like to tell you all here. Okay, now fill in the blank. Be mindful about this question. Fill in the blank. Dash food do you like? Which, what, or whose? Just understand the question well and then give me the answer. Okay, all right. So somebody's saying what? What about those guys? What is the right answer, guys? Tell me what is the right answer according to you. Just make sure like which food are we here talking about, or what food will you say, or will you say whose food? So what's gonna be the right answer, guys? Okay, what is the absolute correct answer? Because we are here basically dealing with the category. All right, that is why you are going to go ahead with what.
Okay, people, so I hope that you all have understood everything in detail and very well. So, you know that CBSE Class 10 Achievers list was so amazing this year. Remarkable performance was being given by the students from our end, that is the Unacademy learners in CBSE Class 10 Board Examination 2022. 99.8% were the highest scorer, 412 plus learners secure 90% or more, 100 plus learners secure 95% or more, and 114 plus learners secure 100 marks in different subjects. So we have Iconic and Plus. In Iconic, we are giving you all the personal guidance, one-on-one guidance from the top exam expert, test analysis would be there, one-on-one guidance from the top exam experts, experts guidelines would be there, study booster workshop by exam experts, study planner would be there, study material, specialized notes and practice tests. Then you'll have the live classes, weekly tests, structured courses, and unlimited access. So you have a chance to study under my guidance, everybody. The very batch is going on. The Umang batch is going on, wherein I'm teaching you all the 10th the English course, okay, and it is going to be continued till your board time. So you better come under my guidance, wherein you can all interact with me more. You all can talk to me. I'll be providing you all my all personal notes, and then quizzes, tests, in the doubt clearing sessions would also be there. So don't miss this out. The classes are taking place on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays at 6:30 p.m. and it continues for 1 hour. All right, so you better be a part of it, guys. It already got started on 30th of September. Mode of delivery here is English, and this is basically for class 10 students. We have Santosh sir, Arshdeep ma'am, Digras sir, and Akash sir. Also, Santosh sir is teaching like science. Arshdeep ma'am is teaching math. Digras sir is teaching social science, and Akash sir is teaching Hindi. And of course, I'm teaching you all English. So please make sure that you all are becoming a part of this journey by using the code PSH10. Okay. Also, we started with the master batch, all right, for all the subjects. This is for class 9. Start date is 6th October. Like this has already been started. And the mode of delivery is English. We have Rashmi ma'am, Lakhan sir, Akash sir, Himal sir, and Shivam sir, who all are teaching us. I mean, teaching you social science, English, Hindi, B, science, and math, respectively. This is for all the 9th graders. So be a part of it, everyone. All right, don't forget the code PSH10. Subscribe right today so that you can come under my guidance, because you're already late by a month. And now do not waste your time. Meet me in the plus classes for sure. As I always say, English is your lifelong companion. Now this is going to stay with you for your entire life. If you really want to work at your com skills and you want to develop your learning and your writing skills, then please come under the guidance by using the code PSH10. Okay, and do not forget to like and share the session with all your friends. And if you're watching the video for the first time, then definitely hit the bell button. Alrighty, we'll catch you all tomorrow with the quiz of the same topic, determiners. Don't forget it. Thank you, sweetie. Seema, thank you so much. Take care. Bye bye.